name, contact number, display, address, notes and attachment, बिल का अकाउंट नंबर और यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशनल इन्फो बिजनेस आईडी नंबर टैक्स पेमेंट और यहाँ पे बिलिंग डेट अकाउंट सेव कर दूं मैं सर। या क्योंकि अभी हम इसके अंदर और कुछ डिटेल फिलअप नहीं करेंगे। ओके सर। ये समझा दो पूरा का पूरा, ये ऑलरेडी अब पता है। मैंने इसके लिए पूछा, ये तो ऑलरेडी पता है ना, उसमें भी सेम था ना। हाँ, यहाँ पे खाली ये बिल पे वाला नया आ गया है, उसमें बैंक अकाउंट ये तो नंबर और ये वो चीज है। सब लिखना है। हाँ, ये क्या होता है कि अगर हम क्रेडिट क्विक बुक्स की बैंक यूज कर रहे हैं, या तो हम्म। हमारे बैंक क्विक बुक्स अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक है, हम्म। तो आप वेंडर के पेमेंट जो है स्केड्यूल कर सकते हो। ओके। शेड्यूल करने पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पेमेंट यहाँ से रिलीज हो ऑटो जाएगी पे होता है जैसे, और हाँ। एंट्री भी अपने आप हो जाएगी। ओके। और कोई भी पेमेंट करने के लिए राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, कि जो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। दैट्स इट। ओके काइंड सर। ऑफ ऑटोमेशन है। नम्रता छोने के क्या गया? સર છું જ હું જોઈ જ રહી છું પણ હું બોલી નહીં શકું ઓફિસમાં છું એટલે. ओके। मिस्टर अभिनव, जस्ट रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड वन अकाउंट ऑफ वेंडर। वेंडर मीन्स सप्लायर। ओके। ઓકે. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर वेंडर एबीसी कॉर्पोरेशन। क्रिएट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन। एबीसी कॉर्पोरेशन वेंडर में नहीं है तो वो पहले बनाना पड़ेगा ना। हम्म, राइट। कॉर्पोरेशन इसको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। अभी ओल्ड सप्लायर को ओल्ड सप्लाई कंपनी बनाना है, फिर उसको इनएक्टिव करना है। ओके। मिस्टर डिलीट अभिनव, करना है। प्लीज डाउनलोड दैट second number PDF file from Google Drive, that is called vendor center, vendor related questions. ઓકે. Did you download that? First of all, do one thing, download all the files in your local drive. Yeah, I did that. Okay, so open that second number file. We are working on it. In the morning, the first lecture was for the customer center, and this is for the vendor center. Okay. And both are similar, so we'll get idea easily. Okay. Delete the vendor account for all suppliers. So we are just deleting it. Okay. Create vendor group name IT services. Don't have an option. So how to create it? होगा You have to go to the vendor, वेंडर edit, एडिट। and then using custom field we can create vendor group. The system is saying it has a vendor group option. So where it is, but गो टू एक्सपेंस वेंडर मैनेज वेंडर ग्रुप्स। go to expense. Here it is available.
वेंडर ग्रुप ऐसा लिखा हुआ है इसमें, मैनेज वेंडर ग्रुप्स। Under the expense, then vendors. वेंडर ग्रुप का ऑप्शन So that kind of options available here, क्या? Under the overview, that will give you overall idea. Mhm. Okay, so using the custom field, we can create it. So let's do it. Yes, here you have to select vendor type, vendor detail, Okay, वेंडर and then here vendor type. ABC सिलेक्ट करना है कि XYZ? Can you हेलो, please? Yeah, ABC कॉर्पोरेशन हमको सिलेक्ट करना है कि XYZ लिमिटेड? but first of all, we have to create vendor type now. नहीं, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम? You can select anyone, ओके, and we want this into the category of vendor. Okay, we don't want this option in sales or invoice everywhere. We want in only vendor center. और नीचे भी है एक्सपेंस। Okay, just save. We did wrong over here. Just a minute. Instead of drop down, we have selected text and field. It's not allowing to edit. We have to create a new one. Because we want drop down list now. Why we want drop down list? Because there are multiple kind of vendors, wholesale, retails, stockist, or any kind of. यहाँ पे टेक्स्ट एंड नंबर Drop down list. यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम में से कुछ Vendor group name, IT service. IT And सर्विस। then also you can add anything else if you would like to add. ओके, वेंडर
वहाँ पे हमने आईटी सर्विसेज लिखा तो इधर आ जाना चाहिए नहीं सर, ड्रॉप डाउन में। Yes, click on it. नहीं आ रहा है सर। Do one thing, just refresh the window. ओके। Yeah, refresh the window. Because what's happened? There are two field names with the same type. Before that, we have created vendor type, and again we have created vendor type. One is inactive and one is active, but the database conflict with that each of one. So let's see, is it coming or not? Okay, so it's happening sometimes. When the data is not getting refreshed, so it's happening. Now assign vendor XYZ to IT services group. That is done. Create a recurring bill for vendor ABC Corporation for 250 per month for IT support. So from where you can create recurring bill? First of all, do one thing, record a regular bill for ABC Corporation. Just record it and then we will recurring it. For any particular vendor, we can record the transaction from the right top options. Just create, you have to mention bill number, payment terms, everything. Now you have to make your habit to record all the things. Or we are done with the customer center. लिमिट नंबर तो चलेगा ना सर? Yeah, you can type any bill number. See, different vendors and different bill numbers. You can't follow the sequence 1, 2, 3, 4. That you can follow that sequence in customer center, not in vendor center. ओके। Just record 250. $250। जी मैं बिलेबल करूँ सर? You can make it not need to make billable as of now. ओके सर। Because just we have to record. No, just record this regular bill first, and later on we will create. Just save and close. Okay. One or more class field. You have to mention class here. Okay, now save and close. So first we are recording the regular bill. So at least we know how to record bills for any other team members. Now we have to create a recurring bill for this vendor. So we open this bill and make recurring. Make recurring. And what is the meaning of recurring? When you record one particular transaction repeatedly for the particular period. अनशेड्यूल रखना है सर? No, sir, there's a schedule, right? ओके। डेज इन एडवांस। ना 1 days करूँ 2 days? Uh, if it is required, then you can do it, but or else you can just ignore it. ओके सर। इंटरवल ये भी इग्नोर करना है सर कि चलेगा? करना है? Monthly day first of every 1 month. Yeah, you can set the on a monthly basis. You just have to understand what the system is saying. कि आपको रिकरिंग मतलब क्या है वो पता होना चाहिए, आपको कब क्लोज करना है वो भी पता होना चाहिए, और यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ऑल दिस. ये
बाय में मतलब स्टार्ट डेट है और फिर बाय में एंड डेट आ जाएगा, राइट। कब खत्म करना है। आफ्टर मतलब कितने ट्रांजेक्शन के बाद खत्म करना है, दैट्स द थिंग्स। तो अभी हम नॉन नॉन रखते हैं। मीन्स infinity. हम्म, Okay, so this तो transaction gonna record by every month first date. ये सब चीजें सेम उसमें भी की थी हमने। Yeah, we have done the same transaction, the same transaction. What's the transaction? What was the transaction? Seventh number. ऑफिस का प्लस, 100 यस of सर। B for vendor XYZ for 400 for office supply. Abhinav, have you downloaded that PDF file and are you front of that? Abhinav, Abhinav, are you there? Yes, sir. Yes, sir. So have you downloaded that PDF file and opened front of you? Yes. Yeah, it's there. Okay, so what is the number of transactions which we are doing right now? So it is Which transaction? all supplies this one. Third one, right? Sorry, Is the third one? the transaction number I'm Hello. asking about from PDF file. Which transaction we Uh-huh. are doing right now? Okay. Do you know that? No, actually. Then why? So just following what you people are doing. But following modules, what I'm saying, you have PDF file and we are doing transaction on a base of that PDF file. But if you are not referring that PDF file, then how would you know why we are recording this kind of transactions? Open that Oh, PDF file and go to the transaction number 7. okay. In this way, you can't learn, Abhinav. Please Mhm. open that file. I, Okay. I have shared those documents with you. Why? There must be a reason for Yeah, that. yeah, Okay? correct, correct. Yeah, please open that file and go to the transaction number 7 Okay. and strictly follow that. What we are doing, you have to read their transactions and then we are going to make the entry here. So, this I'm Abhinav is going to read the it's not transaction work. and then we will do transaction here. यस सर। Okay, Abhinav, can you please read the transaction number 7? Yeah. Generate a bill for vendor XYZ Limited for 400 for office supplies. Go to new bill, select XYZ Limited, enter 400 for Uh, office supplies. Transaction posting will be taken care by Dhiren. He knows how to do it. Okay, but you will have to read the task. Dhiren, now do one thing. You start practice for to enter description also. So what you do, you just take that uh, content copy from the task and just paste over here. लाइक ये करूँ ना, इसमें क्या लिखूँ सर डिस्क्रिप्शन में? डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पूरा का पूरा जो टास्क है वो ले लीजिए, जनरेट बिल ऑफ वर्क। ओके, ये पूरा इसमें लिख दूँ। हाँ, पूरा ले लीजिए।
इसमें पीडीएफ ओपन करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। चलिए उमेश सर, वो क्यूबीओ के बारे में देख रहा था, वो वेरीफाइड, वो मोबाइल के पास जा रहा था, वो मेरे उसमें नहीं आ रहा था। I'll fix it using your screen. Don't worry. After the class, I will fix it. So don't worry. The password and ये everything is working fine. Even I open over here. इसमें अभी एक कॉपी क्यों नहीं करने दे रहा है यार? Just let it go then. Let it go. ये रहा, हो गया हो गया। So if it is taking much time, then let it go. Don't do it. Okay, just assign the class amount. Amount to 400 operations. बिलेबल नहीं करेंगे हम? No, not required to make billable them as of now. ओके We have to make billable when we are doing expense on behalf of any of our customer. ओके, Okay? ऑन बिहाफ ऑफ मतलब थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन अगर हम कर हाँ, अगर थर्ड पार्टी का अगर हम कर रहे हैं तो ओके। जनरेट बल्क बिल्स फॉर 5 वेंडर्स ईच फॉर मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस। yeah, multiple bills we have to record. मल्टीपल वेंडर्स। सर ये जो 7th वन है, वो हम बिल पे कर चुका है, नहीं तो पे कर रहा है, तो जस्ट जो बिल जनरेट कर रहा है। We have to just generate the bill. Seventh number transaction, we have only we have to record the bill, generate a bill, not the payment. So whatever the instruction it is given into the PDF file, we have to just follow that. That's it. Now it is showing generate bulk bill of 500 each for 150 monthly utilities. So here we have to first of all you have to select the type of transaction. हमारा नेट इश्यू है कि ये क्विक बुक्स इतना लोड लेता है सर? No, no, sometimes it's happening. But QuickBooks कितना लोड नहीं लेता है. That work. We have accountant copy, and when we use our client's copy, so that's working very fast. ओके। Bulk transactions, right? So वेंडर्स। the bills, यहाँ पे था सर वेंडर्स में vendors, मल्टीपल no, वेंडर्स। but you are going with a multiple vendor. Why were you multiple vendor? But just yeah, whatever. Or you can do one thing. Where's the batch transaction? Do you know that? Here it is available. If you remember, if I'm not forgot, import data, not import data. No, no, ओके। not that one. Batch transaction that is available in invoice. When we are into the customer center and into the invoice, we have option to add bulk invoice, multiple invoices. मल्टीपल। Yeah, but in that option, we have multiple 6 options. Sales receipt, invoice, bank deposit, bill, expense, and checks. Here, ओके, बिल्स में जाना है यहाँ पे। right? We have to select here bill. Okay, you can type bill number. Wherever you can see the star, you must have to enter that value. वेंडर टाइप करना है सर, इसमें वो ड्रॉप डाउन आया आया। ये बीसी को कर देते हैं। मेलिंग एड्रेस चलेगा। बिल डेट। बिल नंबर कुछ भी लिखना है ना हमें?
Because we don't know what is the bill number of customer. That's why. Okay, okay, okay. कैटेगरी डिटेल्स डालूं कि कैटेगरी डालूं ना सर? You haven't created any. Have you created any items of my item नो, is product? Have you created any product? प्रोडक्ट एक आई नहीं. You haven't created boxes or anything. So just go with the category. Yeah, it's a utility bill. So just you have to select utility category. ओके सर. लोकेशन. कैटेगरी मंथली यूटिलिटी. लाइट बिल मंथली यूटिलिटी. ये यूटिलिटीज में जाऊँ. इधर Okay, डिस्क्रिप्शंस but में. description not required. Just to import the bulk image, you have to focus on those things where star is available. Just enter the amount. ओके सर, डन. Rather than entering bills in a bulk, that is better practice to do them manually. दूसरा भी क्रिएट करता जाऊँ ना सर ऐसा? Oh yeah, you can. इसमें टैब काम करता है सर? हाँ करते हैं ना. इसको ड्रैग डाउन के लिए ऑल्ट ही, वो अच्छा उसके लिए ड्रॉप माउस डाउन. यूज करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप डाउन टैब काम करते हैं बट स्पेस और डाउन करोगे, हाँ शिफ्ट दबा के डाउन करोगे तो शायद ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है. ओके, नहीं हो रहा है. Not working. Just allow me 2 minutes. You record this transaction. I'm just going back. इसके बाद क्या है एक्स enter the bill of X to add 30 late fee. You know how to do that. Delete the bill of also. You know how to do it. Create a debit for everything. Okay, so everyone, you can do that. I'm coming back in 2 minutes. ओके सर. वीरेन थोड़ा स्लो कर, हम भी कर रहे हैं साथ में. ये क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है यार? हो गया.
वो ड्यू ऑन रिसिप्ट क्यों किया जॉन क्रिएशन का? वो मतलब सेम डे पे हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो उसको लेट फी लग जाएगी ऐसा। ओके उसको एक का ट्राई करने के लिए रखा है, लेट फी लग रही है कि नहीं ऑटोमेटिक। ओके ओके। Okay, so let's go with. So you are still on bulk. That's fine. You can just type out 2 or 3. That's fine. मैं फाइल लिखा हुआ था तो हम आज्ञाकारी थे थोड़े तो फिर। Hmm. Just fine. Just close them. एडिट द बिल फॉर लेट फी, लेट फी ऐड कर। क्या है लिमिटेड में? कम वाला। ओके 30। This is wrong. This is the income. हाँ We have to assign expense. तो बनने देते हैं। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस में अंदर Late fee, it's just you can see general admin. Yeah, just let it सब go. अकाउंट No, let it go separately.
8v30. फिर है delete delete the bill for old supplier. तो old supplier में कुछ बना हुआ नहीं है अपना, पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा वेंडर को। तो इसमें एक्टिव कहाँ से किया था हमने उसको, डिलीटेड को, वेंडर्स डिटेल नहीं, एडिट में इसमें जाकर No, कहाँ no. पे, What you want to active? ये जो हम वेंडर्स, डिलीटेड वेंडर्स को Okay, so एक्टिव करना है ना उसको। you have to click on here. So here you can see all the vendors from the gear icon. You can set include inactive also. ओके, ओके अदर्स इनएक्टिव आल्सो, तो इसको पहले अभी एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। Okay, click on it and make it active. एक्टिव उसका इनवॉइस डिलीट करना है तो पहले इनवॉइस बनाना पड़ेगा, Hmm. इनवॉइस डिलीट नहीं होता है। इसमें डिलीट का ऑप्शन है, इसमें वाइड नहीं आता सर। For the expense that is only delete. But what we have to do, rather than delete it, we have to edit and reverse out the expense with the minus amount. For the better practice and for the better reconciliation. What you have to do, yeah, the same कैसे, expense account. And just a minute, why are you using an income account over here? अरे यार मैंने वेबसाइट मेंटेनेंस किया था। हाँ, Type, expense type, or expense type over there, type that, and that will work. No need to find out manually. Type over there, website. Oh, that is also part of. कम आ रहा है। Did you create new account? नो सर, इसमें तो कोई भी डाल दे फिलहाल चलेगा ना सर, No, no. एक्सपेंस। Why the thing which they are saying? Okay, yeah. Expense, assign any expense. It's okay. But expense ये तो account will be डिलीट there, not करना है। income. हाँ, ये तो डिलीट करना है ना। Okay. Now, what you have to do? Rather than deleting this transaction, you have to assign again automobiles here. ओके। Automobiles हम्म। and a minus 500. So the overall effect is 0. ओके, Okay. And what will happen? The invoice will. इसमें फिर हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं इनवॉइस डिलीटेड। Ah, तो वैसे रिकंसिलेशन के टाइम पे हमको पता चल जाए। हाँ, जब क्योंकि रिकंसिलेशन के टाइम पे अगर आता है एक वेंडर का स्टेटमेंट और उसके अंदर अगर ये इनवॉइस है और हमारे पास नहीं है, हमने यहाँ से डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। हम्म। और फिर अगर हमने उनका स्टेटमेंट देखा और अंदर बिल नहीं है तो हम उनको कहेंगे आप एक काम को आप बिल दो उनको। तो हम क्या करेंगे, वो बिल रिकॉर्ड कर देंगे और उसका पेमेंट रिलीज कर देंगे। बट अगर हमें एक्चुअल चीज पता हो कि नहीं, हमने इनवॉइस डिवाइड किया हुआ है उसके रीजन के साथ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के साथ, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होगा। हम्म। व्हाट माय पॉइंट? Done.
Create a debit note for ABC Corporation for $40 due to overbill. स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ. डेबिट नोट मतलब वेंडर्स क्रेडिट हुआ ना सर? Yes. इसका ABC का बनाना है. And whenever you record transaction, you have to go to the particular customer or vendor, and from this drop-down list, you have to make the transaction. So very less chances to record transaction in another vendor. Transaction number 11, create a debit note for ABC Corporation for 30 due to overbilling. नहीं, मुझे सर डाउटफुल लग रहा है. हमने पहले जो इनवॉइस बनाया था ना, ये करके देखते हैं. ये लीगल एंड प्रोफेशनल फीस में डाला कि You can इसमें hold the ही? office journal. Okay. यहाँ पे क्या मतलब टाइप डिस्क्रिप्शन ही लिख सकते हैं ना यहाँ पे? एक 11 का transaction है ना? Create. Save and close. Now the 12th number transaction, it says apply debit note, previously outstanding bill. ये कैसे करना है सर? जस्ट बिल पेमेंट जैसे हम कैसे करते थे, यहाँ पे गए न्यू, 2 मिनट सर, यहाँ पे मिस्टेक हुई है. व्हाट यू डिड, आपको पता चल जाएगा अभी. इनकम. तो वहां पे वेब मेंटेनेंस लिखना था, पूरा नाम क्यों लिखा वेबसाइट मेंटेनेंस? यू कुड राइट ओनली वेब मेंटेनेंस, सो यू कैन बाइफरकेट देम. नहीं, ये बाद में बनाया और पहले मैंने ऐसे ही डाल दिया था उसको, रिकॉर्ड कर दिया था. अभी इसके बाद हमने इसका 400 का इसका भी बनाया था, उसमें क्या डाला था? हम्म, इसमें तो बराबर चल. नाउ हाउ टू अप्लाई पेमेंट? सब में तो प्रॉपर किया नो नो बराबर. नो, डिड यू अप्लाई दैट पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, क्रेडिट? नहीं, अभी ये करेंगे ना सर. बाकी वो मैं करेक्शन देख रहा था कि और कहीं पे तो नहीं किया था ना ऐसा मैंने. ओके. अभी ये कैसे करना है सर? नाउ सी what you do, go to the particular bill, particular vendor, then
type check. Okay. And as I told you, when you click on check, the open bills on right side, and when you click on add all, so this check number 2 becomes bill payment. On left top, what you can see? Check number 2, okay? Okay, that becomes bill number 2. Now you have the same window which you had in customer center. Now you know what to do. Yeah. 40 applied and 40 here. The balance, whatever you have to apply, you have to type here. ये ट्रांजैक्शन फिर से रिपीट कीजिए ना प्लीज. Oh, okay. Just close it. Close the window. See, there is an option to write check to the vendor. Okay, but when we click on a check, so on the right side we get these options. Add to check means they are insisting us to make payment against the bill. Okay, so when you click on add, so we are getting all transaction here. And now this is check number 2 becomes bill number 2, bill payment 2. So now here, how much credit you have left? You have to apply 40. So this is you have selected that. And how much you can apply to against the bill? 40 only. और मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा सर. So you have to apply only 40. Whatever the amount you have, if you go with जितना बनाया उतना. let me practical example. Let me give the practical example. You are purchasing something, and the bill amount is 250. Okay. Now, Sanvika ji, now you are giving 40 rupees product back to the vendor. So how much you have to pay them? 210. Is that correct? आप 250 रुपए की चीज परचेस कर रहे हो. ओके, आर यू गेटिंग? 250 की, हाँ 250 की मैंने परचेस की चीज. हाँ, मैं पे कर रही हूँ उसको 40 रुपीज. बाकी मुझे ये रेस्ट ऑफ अमाउंट. पे नहीं कर रहे हो आप. आपने 250 का परचेस किया था, उसमें से आपने 40 रुपीज का उनको वापस दे दिया प्रोडक्ट के, हमें नहीं चाहिए. ओके, तो 210 बचेगा मेरे पास. हाँ ठीक है, तो 210 बचेगा. तो अभी आपको क्या हम्म. करना है? जो आपने रिटर्न किया हुआ है वो बिल के सामने एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना. हम्म. सिस्टम में क्या होगा, ये भी ओपन दिखाएगा और ये भी ओपन दिखाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 40 लेना भी है और 40 देना भी है. देना भी है. तो वो तो गलत हुआ ना. तो मतलब हम अगर ये दोनों सामने सामने एडजस्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. See the status over here. Let me call status. ये तो नीचे. अब देखो ये क्या हुआ. आपने अप्लाइड. 210 ये का तो ही लिया था, इसका बैलेंस कहीं भी शो नहीं हो रहा है. ओके. 210. आपने 250 का परचेस किया था, 40 का आपने उसको रिटर्न कर दिया. ये रहा वेंडर क्रेडिट. हम्म. ठीक है. तो अब आप कहो अब उससे ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई लो ये 250 रुपीज लो, अब मुझे मेरा 40 वापस दो. अब तो ऐसे ही करोगे कि लो ये 210 आपको देना है मुझे बाकी का, तो ये रहा 210. तो ये सामने सामने एडजस्ट. नहीं. तो दिस इज व्हाट वी हैव एडजस्टेड. जो हमने कस्टमर सेंटर में एडजस्ट किया था ना, क्रेडिट नोट देते थे कस्टमर्स को, द सेम थिंग.
Okay. Okay. So let's go to the next transaction. ये और भी ट्रांजेक्शन आएंगे, सो आप समझ जाओगे. Generate a statement of accounts for Excel showing 250 balance that is not applicable to the, what we say, to the vendor center. But still, if we want to generate any statement for the particular vendor, then we can do it. So how we can do it? Go to the reports, transaction by vendor or AP. Find report by name, type transaction list by vendor. जैसे उसमें किया था कस्टमर सेंटर पे. Yeah, we did the same thing there. Okay, so here you can have the transaction for the particular vendor. So in this way you can generate the statement. Okay, so that's the simple thing. Transaction list by vendor. Now record a payment of 300 made to ABC Corporation. So this is advance payment. So how we gonna record? We are going to record through check. Check. Please do that. Mr. Abhinav, you are there now? Yeah. We are on point number कितने पे? 14. ABC. Okay. Record a payment of 300 made to ABC Corporation. So this is kind of advance payment. So we are going to record only check. We are not going to assign to any bill. Okay, and what you can see, what I'm saying, you can use that option also. Just a minute. Dhiren, just a minute. Yes sir. ओके, यहाँ पे void का ऑप्शन है. This is check. That was that transaction which you voided. That was bill. Okay, so whenever you record any transaction, for the better reporting, we have to try. We get this option, bill payment check. When you go to the check, and when system asks to add bills, you have to add all the bills. But you should not select anyone. Okay, we got all the bills, but we are not going to. ओके, डन डन डन. अभी यहाँ पे हम लिखेंगे ना ऊपर यहाँ पे. Yeah, just we have to record the amount. That's it. ओके, हाँ सेम चीज उसमें करते थे. डन डन. Right? So this is as a Add credit. to credit. So when we get new bills, what we have to do? We have to just tick over here rather than adjustment entry. Apply 300 to 2 bills. Now apply there's a 300 to 2 bills of 150 each for 100. ABC Corporation. So what you have to do? You have to create 2 bills of 150. एक बना हुआ है, एक 150 का यूटिलिटी बना हुआ है. Okay, so what you do? You just copy that bill. How to do it? Yeah, please do it. Copy bill. Bill number you have to enter. Just save and close. कॉपी कर सकते हैं. Now you have to apply this to this bill. Okay, so what we are going to do? We have to just open this transaction, 300 transaction. Yeah. Okay. And you just need to select those bills. No. Just इसमें तो यहाँ पे बैलेंस 90 क्यों बता रहा है?
आपने यहाँ पे 300 के अंदर जो रिकॉर्ड किया 200 सिलेक्ट हो गया इस वजह से. ओके. Okay, no, but it's okay. Now we are going to do this. Save and close. So what we have done, we have applied that 300 advance payment against the bills. So the 100. बिल्स. ओके डन. अप्लाई कर दिया, वो जीरो. यहाँ पे भी बैलेंस में जीरो हो गया. 150 अभी 210 बाकी है. Now the next transaction, process a partial payment of 70 to XYZ Limited on 200 bill. Where is XYZ Limited? अब ये रहा. ये कौन सा बिल बोला? 200 के सामने तो पहले 200 का इनवॉइस बनाना पड़ेगा ना. Bill, not invoice. हाँ हाँ, ओ सॉरी, बिल बनाना पड़ेगा. Invoice related to customer. कस्टमर. एक्सपेंस. भाई ये कहाँ से पे करना है सर इसका? Again, you have to write check. क्या? Process partial payment means you have to make partial payment. So $70 only. Against this 200 bill, you have to release 70 only. ऐसे तो That's सर it. आपने होशियार बना दिया है. Hmm. बचा होगा. 130 रन. अप्लाइड. Here the balance is showing 130. रिकॉर्ड एन एडवांस पेमेंट XYZ फॉर फ्यूचर सर्विस. सेम करेंगे ना जैसे उसमें किया था. हाँ 300 में किया था वैसा एक्सेल जेड को 600 एडवांस पेमेंट किया सो गोइंग थ्रू रिकॉर्ड थ्रू चेक. When you type amount of on the upper side, just make sure it is not going to take by default to any bills. Okay, showing credit. Close it. Issue a refund request. Issue a refund request for 70 from ABC Corporation for overpayment. This is something which we have received from the vendor for the overpayment. So what you have to do, you have to reverse out the expense and make bank deposit. Because you got payment from the vendor for the overpayment. Hmm. So please open bank deposit. Not from here, from the plus new transaction. Bank deposit. बैंक डिपॉजिट. We have to apply logic. Which module can be found under which tab? 240 हो जाएगा. वो कौन सी लोकेशन में There are no transaction matching the criteria.
Who has given? ABC. EBC Corporation, not customer. Have you created vendor? No, we create. No need to go like this. What is the expense you have assigned to them? Website maintenance. Website. That expense, okay? Yeah. Okay, how this payment is recorded open. Payment method. Check. Amount 70. Class. Operations. Just a minute. Let me check this website maintenance. Okay. Second type. Okay, आप जब पहले बता रहे थे कि हम लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं लोकेशन वाइज। हाँ, यहाँ पे क्या करना है सर? लिख सकते हैं ना कि ओवर पेमेंट ओवर जैसे पेमेंट किया पेमेंट। कैशबैक गोes to बैंक ऑफ अमेरिका। कैशबैक मेमो कैशबैक अमाउंट। यहाँ पे लिखना है क्या सर? नो, नहीं ना। सेव एंड क्लोज. जस्ट सेव एंड क्लोज। Just a minute, just a minute. If you type your cashback amount, so that's gonna transaction gonna be zero. Type 70. हाँ, 0 0 हो गया था, इसके लिए मैंने हटा दिया। फिर Okay? इसके लिए मैंने फिर आपसे पूछा। Just save and close. So we have recorded deposit of $70. Now, no, do you know how to record bounce check of 150 paid to XYZ Limited? बाउंस चेक हमने उसमें भी किया था। That was different scenario. In this वो scenario, our तो bank different account था। balance increased by 150. ये कैसे करना है सर? You have to record from bank deposit. डिपॉजिट्स में से तो ना XYZ को करना ना। पे जाना है सर? We have received from vendor. XYZ लिमिटेड। No, so we have to record this transaction through not GV, not through bank deposit, but through GV. सिलेक्ट कर दो ना यहाँ पे सर। Why? Let me tell you. Let me tell you why. Just do one thing here. Are you getting that XYZ Limited XYZ वेंडर। यस सर। account type accounts payable? उसमें अकाउंट रिसीवेबल किया था, इसमें पेबल आएगा। But we made that transaction through JV, and here we are using bank deposit. I'm just testing this transaction. Is it working or not? XYZ में सर। Limited, right? यस सर, लिमिटेड। Okay, so that's working. यस सर।
So when we have bounce check, like whatever amount we pay to our vendors and the payment is bounced, so we can record that through deposits. And to Deposits. that we have to select the vendor name and then accounts payable. Only after that they are allowing us to record to post transaction here. Else you will not get any transaction effect. Okay, so let's do the next one. Send a bill reminder to XYZ. That is not our cup of tea. Set up automated payment reminder for bills over 30 days. That is not part of vendor center. Customize the bill template to include company's logo. That we already done in customer center. Enter email bill of 150 to XYZ. In the vendor center, we should not send the bill. Okay. Okay, so here we are completing 23 transaction and 2 pages. By the next lecture, we will continue with the further. 24 number. Okay, Okay, sir. and I'll share a recording of this video to everyone. Okay, sir. Thank you. Okay, yeah. Thank you, guys. Namrata, Tanika ji, Abhinav, Yes, Nilesh. I am here. અરે ધીમે અમારું કાન ના પડદા ફાડી નાખે. બસ એટલે જ આમાં કેવું હતું આખા લેક્ચરમાં બંધ એટલે જ રહી કે મારે હેરાન નથી કરવા કરીને. જો મારું ડોગી પણ બૂમો પાડી રહ્યું છે મારી જેમ. वॉल्यूम भी कम करना पड़ा. अरे उस दिन तो मैंने हैंड्स फ्री लगाया हुआ था. एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैं